So hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. So today I'm going to explain you about the tripper navigation system and how it works, and what are the demerits of tripper navigation system. Okay, so first thing, आपको आरे का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा. So once you install the Royal Enfield application, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो you can just click on the sign up option and you can just enter your details to create your account. Okay, since I already have an account, so I'm going to log in here. Okay, so once you log in, so this is how the Royal Enfield app screen looks. So you have this community, motorcycle, navigate and make it yours option. So for tripper navigation, you will have to go to navigate button, then you have to click on this helmet icon. It will ask you to turn on the Bluetooth. Click on allow. So just switch on your bike. Okay, so initially when your tripper navigation is not connected, you will see the time on the screen. So on your phone, you will get this my tripper devices. You have to search for that tripper navigation name or ID, you can call it. Okay, once your scanning finishes, it will show you the tripper navigation device name, which is RE_DISP. Just click on this. So it will ask for pairing devices 6-digit code. So here you can see the 6-digit number 115721. The same thing you need to enter on your phone, 115721. Just click on connect. So you will get this notification, and just go back and click on enter some destination here. So once you're connected to the tripper navigation, right, the helmet icon will be green here after that. So let's say I'll keep the destination something like Gokarna. So once you do that, just click on get direction, and once I click on navigate, as you can see on the screen, it will show the primary and the secondary kilometer. So primary kilometer is nothing but the 55.4 kilometer, right? That is your primary destination, and secondary navigation is your 150 meter. So it is saying that after 150 meter there'll be a left turn. So this is how the tripper navigation works. So if you stop the tripper navigation, you can just click on stop navigation button here. So also, just in case, if you, for example, you stop your bike somewhere and you just switch off your bike, and so on your screen you will see tripper disconnected, please connect. So if you switch it on, it will take some time, and then you can see on the screen it is connected back to the tripper navigation. Also on the phone screen you can see navigation is being displayed on the motorcycle tripper device. ओके, सो ये ओवरऑल डिटेल्स था ट्रिपर नेविगेशन रिलेटेड. अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ये फीचर ठीक ठाक लगा. अभी आरी ने ऐड कर ही दिया तो कर ही क्या सकते हैं, सह लेंगे. सो मैं फिर भी प्रेफर करूँगा मोबाइल होल्डर लगाना, क्योंकि इतने छोटे से स्क्रीन पे मुझे नहीं लगता कि इतना हेल्प करेगा नेविगेशन के लिए. समटाइम्स हम लोग गूगल मैप लगा के भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो
पता नहीं ये जो छोटा सा स्क्रीन ये कितना हेल्प करेगा। ऑल्सो मैंने बहुत सी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने बोला कि ट्रिपर नेविगेशन काम नहीं करता एक बार आप बाइक ऑफ कर दो तो, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखा है कि ये काम करता है। ओके, सो एक और चीज़ मुझे लगता है कि अगर आरे को ट्रिपर नेविगेशन ऐड करना ही था तो आई थिंक स्क्रीन साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। इट शुड हैव बीन मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए था स्क्रीन पे ताकि राइडर को हेल्प हो नेविगेशन में। अगर वो ये चेंजेस करते तो शायद ये जो नया अपडेट आरी ने ऐड किया है वो थोड़ा और इफ़ेक्टिव होता। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।